Hello, ladies and gentlemen. This is me, Umar, your host, and today I have brought a really special guest for you. She's Anam, and she's working as a HR, and she's applied psychologist as well. Hello, Anam. How are you today? I'm good. How are you? Okay, wonderful, fine, thank you. आप ये बताएं कि आपका यहाँ पे सफ़र आने का कैसा रहा Yeah, it was good. It was a long way, but it was good. और मौसम कैसा है बाहर? अभी भी सर्दियाँ start हुई है, so I'm not really a cold person. Okay. So for me, I do not really like the weather. Okay. तो आपको सर्दियाँ नहीं पसंद? Yeah, I do not like the Oh cold. my God, आप स्पेशल हो. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर एक को, स्पेशली लाहौर में ज़्यादा लोगों को सर्दियाँ पसंद होंगी. ओके, गुड. तो आप अपने बारे में बताएं 2-3 सेंटेंसेस में कि आपने कौन कौन से प्रोफेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं और काम कर रहे हो किस किस में. So basically, I am a graduate of applied psychology. During my applied psychology, I did few internships in hospital settings as a psychologist. Besides that, I was a teacher assistant and I had done large amount of research. When I graduated, as I had exposure of almost every field, I got an internship in HR and I went towards HR. And since then, I am a professional HR for the last 2 years. ओके, आप HR भी हो, आपने टीचिंग भी की है और आप साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो 3 चीज़ें. ऑलराइट. अच्छा, पहले सबसे शुरू करते हैं कि व्हाई यू सेलेक्टेड साइकोलॉजी एंड व्हिच टाइप ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प आवर ऑडियंस. और आपको क्या उससे साइकोलॉजी से हेल्प मिली? So my main aim of choosing the subject in my BS was because I wanted to join the Pakistan Army. So that as a female, you can it was easy to be a first female psychologist in Pakistan Army. When I went through the course, we do study different things. We do go with clinical, we go with counseling, we go with educational psychologist. क्योंकि psychologist की हर जगह ज़रूरत होती है. In that process, I went through the hospital settings जहाँ पे I would deal with one-on-one patients. I would be dealing with group counseling, and then there were some outdoor patients. It was interesting क्योंकि it was something जिसमें you get aware of yourself and then you get aware of the people as well. So now I can, if someone is upset, I can know why they're upset, because somewhere I can understand how I can help them with their situation and all those stuff. And it doesn't really has to be that I have to put in a lot of effort or something like that. Sometimes just listening to the person just helps him out. बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बात की है कि उनको पता चल जाता है कि कोई अपसेट है या नहीं है. ये तो बहुत फ़ायदेमंद बात है हर एक के लिए जो इनके इर्द गिर्द होगा. Yeah, I think psychology is a subject which can give you patience, give you time to relax yourself. कोई psychologist है वो आपकी बात सुनेगा, वो आपको जल्दी नहीं डालेगा कि ये काम करो. और उनका जो हार्ट है वो बड़ा होगा, वो फील इजीली करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सेंसिटिव भी होते हैं साइकोलॉजिस्ट. सो आप जो अपने आप को किस तरह का इंसान जो है ना आप पोर्ट्रे करती हैं, अंदर से आप कैसी हैं और आप कैसा पोर्ट्रे कर रही हैं? If I talk about myself, yes, I'm a sensitive person. I'm a stubborn person. I lack patience. But when it comes to me being a psychologist, so you would find me empathetic. You would find me not stubborn, and I would have a lot of patience when listening to people. Okay, हाँ जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किन लोगों को आपकी ज़रूरत है? क्या वो फीलिंग्स होंगी एक लड़के की जो 20-21 साल का है या 30 साल का है, उसको क्यों साइकोलॉजिस्ट पे उनके पास जाना पड़ेगा? कुछ रीजन बताएं. Okay, so one of the questions that arises a lot why do you need a psychologist? So there is a difference between a psychologist and psychiatrist. When we talk about psychiatrist, so that is purely medical. ठीक है? So someone is experiencing hallucinations and delusions and schizophrenia, like reality confusion जिसको हम कहते हैं in normal terms. We would prefer कि he go to a psychiatrist. When we talk about people in normal life, people who are having issues
with depression and anxiety and all those stuff. Well, normally people say कि 2 दिन upset है, they would say कि I am depressed. That is not depression. Depression has a clinical diagnosis कि अगर if you are sad, if you are withdrawing yourself from your environment, and there's certain factors. Based on that, if this consistently goes for 2 weeks, like 14 days, you can consider yourself as depression. Wow. Again, there are few types of depression. There are some depression जो कि seasonal आते हैं. December is like सर्दियों का महीना is normally known as the depression season as well. Okay. क्योंकि it has some relationship with the cold weather and depressive people, loneliness, and that strikes a lot in people. ओके, तो पहली बात ये समझ में आई कि साइकोलॉजी पहला लेवल है अबाउट योर फीलिंग्स एंड मेंटल ब्रेन, और किस स्टेज का आपकी अनईजी या अपने आप को नापसंद करने की स्टेज का कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. और साइकाइट्रिस्ट जो है वो उससे नेक्स्ट लेवल है, लाइक मेडिकल साइड पे ज़्यादा. जी हाँ बिल्कुल जी. ऐसे. ओके, ये मुझे नहीं पता था. ऐसा नाइस इन्फॉर्मेशन आ लगता है. अच्छा, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली 14 डेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो रिलेटेड है आपकी फीलिंग से, आई वुड से वेरी इजी वर्ड, फीलिंग से रिलेटेड है, मूड से रिलेटेड है, तो यू शुड ट्राई टू बुक अ प्लेस विद अनम. शी विल गाइड यू एंड वेरी लो प्राइसेस बिकॉज यू आर वाचिंग माय चैनल. अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि आपके पास कोई आता है, आप कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी स्टेज में, वो किस तरह की प्रॉब्लम में है? So it only works with a simple talking. So someone comes to you, you develop a rapport with them. आप उनसे बात करो. They will eventually, if they are so relaxed, they will eventually tell you what the problem is. Well, one of the issues is कि अक्सर cases में they say that is the problem, but underneath issue कुछ और होता है. So in that situation, we just need to keep talking. So now there are different approaches in psychologists. There are approaches which doesn't deal with the problem. ठीक है, they deal with the behavior transformation. There are psychologists जो आपके thought pattern को change करते हैं, and then there are psychologists जो कि that goes deep into the core issue के issue शुरू हुआ कहाँ से था, and they try to resolve that part of your life. ठीक हो गया. So this is like basically आप बात करते हो, eventually the person will start opening up to you. बात करते करते ही प्रॉब्लम भी हमारे सामने आ जाती है, बात करते करते ही सोल्यूशन आ जाते हैं हमारे सामने. लास्ट वीडियो में भी मैंने एंड पे ये मैसेज दिया था, डिस्कशन इज अ सोल्यूशन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस विद द पीपल हु आर लाइक यू और मे बी अ लिटिल बिट ओल्डर और बेटर देन यू और मोर एजुकेटेड देन यू, तो आपको पता चलेगा कि आप डिस्कशन से आपको 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस मिलेंगी और आप पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को एवेल्युएट कर पाओगे. यू डोंट नीड टू टेक दिस. किसी से पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उसकी हर बात मान लो. सुनो, राइट डाउन, टेक नोट और वोटिंग करवाओ. उससे आपको डायग्नोज होगा कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सही है या नहीं है. ओके, और बहुत अच्छी बात है. अच्छा, पाकिस्तान में लेट्स टॉक अबाउट कितने % साइकोलॉजिस्ट चाहिए होंगे? मतलब हर 1000 बंदे के लिए एक चाहिए होगा? क्या रेशो आपको लगता है कि होगी? Well, considering के recent scenarios क्या है, I do believe कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. We have seen कि अब KPK में after the incident of after the school incident काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट यहाँ से वहाँ भेजे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एज सच कोई पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम नहीं है. So the children do need psychologists because some of them are suffering from PTSD and all those stuff. When we talk about normal students, so a part of psychology is with dealing with students' career selection as well. Career counseling जिसको हम कहते हैं, वो भी हमने करना है. वो मे बी नेक्स्ट और उसके बाद 1-2 वीक के बाद मैंने वो व्लॉग करना है कि मैट्रिक में जो है 10th ग्रेड में वो क्या करना चाहते हैं, उनका आगे डायरेक्शंस क्या क्या होंगी. विल कम बैक टू दैट. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत और
मेन रीजंस क्या हैं, किस तरह के लोगों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और वो नहीं आते आपके पास? Okay, so all age range do need psychologists. The mother who just gave birth to a child, they suffer from a huge psychological things. Then the child who is in his like तकरीबन 6 years की एज तक जो होता है, अक्सर लेट बोलना शुरू करते हैं, अक्सर लेट चलना शुरू करते हैं. If it's not a physical reason, it's a psychological reason. That are the factors. फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, eventually all the stuff, teenager, adolescence is a really sensitive period for the students. इसी में आपकी identity develop होती है. One wrong move या one traumatical event can really psychologically damage you. And then recently when we grow old to our young adulthood, we think we can handle things at our own, and we tend to like wind ourselves या bottle ourselves up. इस पोजीशन में I do believe कि साइकोलॉजिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि the people do not go like the people do not approach to other people, they do not ask for them. उन्होंने अपनी एक दुनिया बना लेती है, and they prefer staying with that world and being in contact with those people only. And then again later on age में भी ज़रूरत पड़ती है. Retirement, when a person crosses 50 to 60, अब उसकी old age आ गई है, his children are leaving, his family is leaving, probably family members बच्चे भी नहीं हैं, his retirement is coming through. इसमें एक बहुत बड़ा life changing experience होता है. This is where you need a psychologist. Like psychology is a stigma still in Pakistan. People do not go towards a psychologist. People promote other people to go towards a psychologist, but when it comes to you, the people would say okay, no, it's better talking to a person than a psychologist. But a person with a professional degree will definitely help you more than some of your friends. Okay, good. पहली चीज़ के जो नई मदर है उसको how can she handle that situation, और उसके बाद आपने बोला कि old age, और उसके बाद मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है किसी इवेंट के बाद उसको एडजस्ट करना, उसको हज़म करना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ हो चुका है और उसको आपने एब्जॉर्ब करना है. Either you can take it in a wrong way or and keep sad and keep yourself like low and go to a dark side which is leading towards unsuccessful life, or you can try to take out positives from there. अब कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिससे आप पॉजिटिव सीखना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है आपको एडजस्ट होने में राइट डायरेक्शन में, देन आई थिंक यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट. कि फॉर एग्जांपल कोई फेल हो गया किसी एग्ज़ाम में और उसका 1 साल ज़ाया हो गया, या कोई जॉब किसी की लॉस्ट हो गई है, या कोई और फैमिली में कोई इशू है, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसकी पाकिस्तान में तो मुझे लगता है रिश्ते पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उन चीज़ों को एडजस्ट करना, और अपनी फैमिली को पाकिस्तान में आप छोड़ भी नहीं सकते, बाहर तो अकेले रह लेते हैं लोग, पाकिस्तान में फैमिली है तो फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं. मैंने बहुत से लोगों को सुना है और देखा है कि देयर फैमिली इज़ नॉट लिसनिंग टू देम एंड नॉट सपोर्टिंग देम. सो व्हेन योर ओन फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग देम, you try to take advice from a psychologist, professional psychologist. Okay, it was wonderful talking to you about psychology. Now let's talk about the hospital work you have done. Okay. So I have worked in 2 of the government institutes in the psychological department. It's some really big institutes. So what happened is because mostly institutes are government institutes, besides that I have worked with addictions patients as well, and as a child psychologist. So when we talk about the institute, it's like a patient would mostly come in at their severe stage. तो पाकिस्तान में जब आप एक हॉस्पिटल में लेकर आते हैं तो इट्स बेसिकली आपको इमरजेंसी में लेकर आया जाता है. उस केस में यही होता है कि मोस्टली आपको इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं so that you can just calm down that stage. You would be in the rehab for few while, and when you are stable या like ready to listen to someone, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास. Wonderful, I like that. Okay, इन्होंने कहा कि आपको पहले
इमरजेंसी में जाते हो, आपको कुछ इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उसके बाद जब आप उधर से वेकअप होते हो, आप नॉर्मल स्टेट में आते हो, जब आपकी कुछ सुनने की सलाहियत है, देन द डॉक्टर विल एडवाइस यू साइकोलॉजिस्ट, और वो भी डॉक्टर ही होते हैं एक किस्म के, और वो आपको फिर गाइड करेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई इन्वेस्टिगेशन करने आ जाए, किसी टीम के लोग आ जाए, तो और आपके बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स आके फिर आपके ऊपर स्ट्रेस डालें, तो द बेस्ट आइडिया इज़ नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट एंड लेट देम talk to the psychologist for few hours, maybe few sessions, maybe few days, maybe. Yeah, मुझे एक मूवी याद आती है, द डिपार्टेड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, उसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट का रोल था। आई रिमेंबर दैट, दैट्स वेरी यूजफुल। कुछ लोगों की जॉब नेचर, काम, पढ़ाई लोगों की स्ट्रेसफुल है, उससे वो प्रॉब्लम में आते जाते हैं, उनका जब वो गोल अचीव नहीं होता, दे आर रियली सैड। और कुछ की जॉब ही इतनी कंटिन्यूस स्ट्रेस है, लाइक उन्होंने 2 साल में छुट्टियां नहीं ली हैं 1 महीने की या 2 वीक की, तो वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और उनके लिए भी मुझे लगता है कि इट्स रियली यूजफुल टू हैव, पूरी छुट्टियां ना लो, 2 दिन की छुट्टी लो एंड टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, हर इंसान का साइकोलॉजिस्ट से लिंक होना ज़रूरी है? वेल आई डू बिलीव कि हर इंसान का साइकोलॉजी से लिंक होना ज़रूरी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, तो यस, एवरी स्कूल शुड हैव अ डेजिग्नेटेड साइकोलॉजिस्ट। जहाँ हम लोग स्कूल में काउंसलर रखते हैं, तो द काउंसलर इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एज वेल। So it's like now the person should be able to release the stress of the student, make them calm, एंड जस्ट मेक श्योर कि उसकी लाइफ ठीक चल रही है। बाहर के, आई थिंक बाहर के मुल्कों में यही होता है कि द काउंसलर इज़ अपडेटेड विद द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अगर वो किसी टाइम पे कम हुआ है अपने मार्क्स में, सो वाई इज, कहीं उसके घर पे कोई इशू है या समथिंग लाइक दैट। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस, सो यस, नाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, एंड रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट कंसिडर किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, where these psychologists are particularly work in the organization. वो in-house sessions लेते हैं, वो देखते हैं कि someone is like stressed about his work या something like that, तो वो उसको बुलाते हैं, they will have sessions with them. So now the person doesn't has to go to a psychologist. It is available for them. In their workplace, in their office, yeah, in their schools and universities. Okay, very good phenomena, or the way to handle the situation is your organization, because individual might not think that he or she needs psychologist. तो आपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में, स्कूल में एक अवेलेबल कर दिया साइकोलॉजिस्ट को, जो कि बैक एंड पे मॉनिटर कर रहा है कुछ लोगों को, और उनमें से फिर लगता है कि everyone should have a session every month for 15 minutes with a psychologist. तो आप रूटीन जिस तरह मेडिकल चेकअप करवाते हैं, जिस तरह आप किसी एग्ज़ाम में टेस्ट होता है आपके ब्रेन का, आपकी एटीट्यूड का, आपकी मार्क्स का, उसी तरह जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी आपका एग्ज़ाम ले छोटा सा, और आप अगर उसमें कंफर्टेबल हो और आप फुलफिल करते हो, देन यू मूव अहेड, और अदरवाइज दे सजेस्ट यू समथिंग डिफरेंट, अ प्लान वे यू कैन चेंज योर हैबिट्स। ओके, बहुत अच्छी बातें की साइकोलॉजी से रिलेटेड, एंड व्हाई डू यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाई डू यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। If you have any question, I will give her email ID in the description. You can directly email her. She will guide you. इनिशियल जो आपको गाइडेंस है वो मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं HR के बारे में। HR का तो सबको पता है कि what they are doing. Their job is tough. I know that they have to handle a lot of employees. They have to give them promotions or take actions against them or something like that. These days HR have been given a lot of other responsibilities as well. तो मुझे मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर आप 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको अपनी मुताबिक जॉब कैसे सर्च करनी है, कौन सी कंपनीज और कैसे HR को हैंडल करना चाहिए, HR किस तरह आपको अप्रोच करता है, और एम्प्लॉय को, कैंडिडेट को कैसे उसको मैनेज करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली वो जॉब ले ले। Okay, so if someone who is a fresh graduate, तो definitely उसके पास कोई experience नहीं होगा, and he would definitely go for an internship. ठीक है, क्योंकि that is what at the moment you can get.
So we can hope कि just go for an internship. I understand कि we have invested a lot in our education, तो we expect कि जब हमारी graduation हो तो at least हमारी एक less amount की salary हो जाए, but that is not possible because you need to prove your worth in order to get a salary. So when you just enter into an organization, you prove yourself, you tell them that you are capable of working, and they eventually hire you on board on a good salary. किसी भी जगह पे एंट्रेंस आना मुश्किल है, एंड एंट्रेंस से भी ज़्यादा पहले इट्स मेनली कि आपकी CV प्रेजेंटेबल. I have seen many people who are not working on their CV, and I have seen many people who like go with a copy paste template. So yes, that is okay as well, but as long as it's original. So when I say original, so it is supposed to be your career objective. So you have a particular experience, you have a particular information, write it down in your career section. You have a particular skill, write it down into 2 to 3 lines. हमें एक पूरा 5-6 lines का paragraph नहीं चाहिए होता. If you have any volunteer work, any experience, anything, any projects, go with that portion first. Then go with your education. And now, if considering that you have never been a part of any internship, any volunteer work, you can go with your education, but make sure कि आप highlight करो उसके अंदर कि these are the courses you have studied, and these courses would enable you to do go into these fields. Do mention your skills. So when we say mention your skills, go with like what technical skills you have, what other skills you have, and how are you different from other people. उन्होंने कहा कि आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हो. ओके, इंटरेस्टिंग है. अच्छा, 8-9 साल पहले डिग्री करने के बाद सीधा जॉब मिलती थी. अब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स जो है वो रियल बिग ट्रबल में हैं. आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. लेकिन सीरियसली है, आई हैव सीन लाइक गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग इंटर्नशिप इन their 3rd year, then 4th year, and then again in 4th year, then again after their graduation. So I feel really for them that it's becoming really harder and harder day by day. It's becoming difficult. Yeah, so मुझे किसी ने कहा था कि if you अब फ्रेश ग्रेजुएट को बहुत सक्सेसफुल बंदा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसने कहा था कि डोंट जस्ट राइट यू हैवंट वर्क एनीवेयर, जस्ट राइट समथिंग यूजफुल, समथिंग, एनीथिंग यू वांट टू राइट. कुछ लोग और भी चीज़ों पे बिलीव करते हैं. आई फील कि अगर आपने इंटर्नशिप की है, यू कैन से यू हैव वर्क एज अ फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय. इंटर्नशिप को आप चेंज भी कर सकते हो, टाइटल चेंज भी कर सकते हो. यू सी, आई एम अ जॉब सीकर एंड शी इज़ गोइंग टू गिव मी अ जॉब. दैट्स व्हाई वी आर हियर नाउ टॉकिंग अबाउट दिस HR. मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैंने 6 दफ़ा इंटर्नशिप कर ली, मुझे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही. 2 इंटर्नशिप काफ़ी हैं, बाकियों को चेंज करो टाइटल, उनका लिखो कि ये परमानेंट जॉब थी and I didn't like the company, I didn't like the boss or something, I quit again. Okay, I have a big problem with those people around me or asking me questions like why do you switch too much. Is switching really harmful? But I will tell you something, all maybe not me, I'm not saying it's me, all clever candidates, clever graduates will switch quickly. In 3 years they will move 6 times, and 7th job they will be on the right level they want to be. तो क्विटिंग जो है ना इतना गलत भी नहीं है जल्दी. तो ओके, मुझे बताएं CV में जो एरर्स हैं, स्पेलिंग एरर्स और कुछ डेट आगे पीछे हो गई, 1 महीना 2 महीने आगे पीछे हो गई, टॉलरेंस लेवल HR का क्यों कम होता जा रहा है? टॉलरेंस कैसे आएगी कि हम 1-2 मिस्टेक्स को, 1-2 प्रॉब्लम्स को छोड़ के कैंडिडेट को कॉल कर लें इंटरव्यू के लिए? Well, I do believe कि at certain times calls हो जाती है, ठीक है, but if someone is providing us with a CV जिसके अंदर fonts different sizes के हैं, हाँ जी, and the spelling mistakes like
there is a difference between typo error and spelling mistakes. So एक proper spelling mistakes है, and we do not go with the grammar, ठीक है, क्योंकि we know we are in Pakistan and it's okay अगर यहाँ पे लोगों की grammar खराब होती है. See, it's a CV, it's supposed to be short. But yes, that is something जो कि if someone's basics like CV is your first appearance to the HR. If your CV is passed on based on certain criteria, then आपको इंटरव्यू कॉल आएगी. ओके, तो सीवी अच्छा होना चाहिए. सीवी के ऊपर बहुत अच्छा बैकग्राउंड लगाओ और सीवी के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखें एंड से यू आर अ ब्यूटीफुल एचआर और समथिंग लाइक दैट. यू नीड टू ट्राई टू या यू आर हैंडसम मैन, हैंडसम. अच्छा, और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने सीवी लिखा, सीवी आप कैसे अगर आप 100 सीवीज आए हैं तो कैसे उनको ये इस साइड पे जाने का, लेफ्ट पे और ये राइट पे? Okay, so definitely we are given with a JD. So we are given with a job description. We are given with a criteria. Sometimes there is a criteria कि हमने ना इससे ज़्यादा experience लेना है ना इससे कम experience लेना है. So we usually go with the filters. ठीक है, eventually we go with the filters and we would like अगर 10,000 CV है तो उस filtration से हमारे पास 500 की CV आ जाएगी. Then if we have an educational criteria जो कि we believe कि this particular of education would be good in this, so we go to that another filter. Now most of the web portals, your websites have provided us with a salary range as well. So that is the third filter that we usually put in. So इसके बाद eventually it does narrow down to 150 CV. There are certain more filters we can go with, but eventually I do believe that I go through one-on-one CV and like just see the things that are needed. When we talk about fresh graduates, जाके मुझे नहीं पता कि what we are expecting and what is needed from them. So yes, that is something that I go through the CV, and then it's like a bunch of CV. It's like thousands of CV. So that is like I have to pass a glimpse. If the CV अब मुझे formatting उसकी अच्छी नहीं लगी, मुझे उसकी overall चीज़ें अच्छी नहीं लगी, I will skip the CV. So that is where yes, a negative sign of it. अच्छा, ये बहुत strong combination है, psychology and then HR. I think it's a powerful combination of two big strong tools or skills you have. तो अपने personally, I will give a message to my HR friends and try not to show your personal grudge or emotions or your अगर आपको किसी से लड़ाई हो गई सुबह या आपको लगता है मुझे शाम को किसी के पैसे देने हैं, तो वो फीलिंग्स ना निकालो सीवीज़ पे. अच्छा, एक और बात, आपको पता है कि जब आप किसी नए किसी का इंटरव्यू लेना है, वो आपकी कंपनी में एंटर हो रहा है, तो उसे किससे हेलो करना चाहिए और किससे हेलो नहीं करना चाहिए, मुझे बताएं कि ओके मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. 3, 4, 6, 10 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आपका नया कैंडिडेट जिसने वो इंटरव्यूअर है, सॉरी उसने इंटरव्यू देना है, अपना इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो, और उसको गेट कीपर ने ओके पास ऑन, रिसेप्शन पास ऑन, वो मीटिंग रूम में बैठा है एंड समवन रॉन्ग पर्सन विल एंटर एंड स्टार्ट टॉकिंग टू दैट कैंडिडेट. मुझे नहीं समझ आता कि वो क्यों. सो आई वांट टू हाईलाइट दिस फैक्ट that HR should be responsible enough कि कोई आपका नया बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है वो किसी गलत बंदे से ना मिले. गलत बंदा आपकी कंपनी में ही होता है, हर कंपनी में होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और वो आपसे आके इंटरव्यू ले रहा है. और सो एवरी कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, ज़रा ज़ोर से ऊंची आवाज़ से, डरने की ज़रूरत नहीं है, पूछें हु आर यू एंड मुझे इस बंदे से मिलना था, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, आपका डेजिग्नेशन क्या है, डू आस्क. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन लोगों को इंटरव्यू लेना चाहिए? So basically the interviewer is the interviewee is supposed to be an expert of the area. So if you are hiring for like let's just say हम लोग सॉफ्टवेयर के लोग हायर कर रहे हैं and we require a particular software, we require a WordPress person.
I'll make sure कि the WordPress, the senior person of the WordPress is there, and the director of the IT या जो भी department है that is there. सॉरी टू कट यू. Yeah. आप 3 लोग नॉमिनेट करें, एक टेक्निकल, एक आपका HR हो गया, और तीसरा उनको मे बी असिस्टेंट मैनेजर इन दैट It's फील्ड. like definitely उसी डिपार्टमेंट के 2 लोग आए कि एक तो उस फील्ड का एक्सपर्ट एंड उस डिपार्टमेंट का हेड, एंड देन देयर इज एन HR पर्सन, सो दैट जस्ट टू मेक श्योर कि नथिंग गोज रॉन्ग या नथिंग गोज इम्बाइस. अच्छा, मेरा जो अगेन वो मशवरा है कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी. डोंट वरी, आप मिनिमम 10 इंटरव्यूज़ प्लान करो, 10 इंटरव्यू दो, और हर इंटरव्यू में बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ anyone sitting in front of you. Try to say whatever you want to say. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जॉब जब मिलनी है तभी मिलेगी. अपने रूल्स, अपने एथिक्स, अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको नीचे ना लाएं. आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि इंसान जो है वो आउटकम से डरने की वजह से आंसर ही गलत ना करे या बोल ही ना सके. तो और HR जो होते हैं वो बहुत स्वीट इंसान है. वो जब घर जाते हैं उनको लगता है कि हमने किस किस तरह से किस किस के साथ क्या क्या किया है, तो उनको फील होगा आज नहीं तो कल होता है. तो एक्चुअली उनकी भी जॉब डिफ़िकल्ट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत कैंडिडेट तो हायर नहीं हो जाएगा. अच्छा, अब मुझे टेलीफोन आया, मुझे सैलरी क्यों बतानी है अपनी करंट? Well, it is something that it is a basic protocol जिसमें आपको पूछना होता है कि आपकी existing salary है क्या. So if someone we really do not expect like want कि हम आपकी existing के equal दें, but let's suppose कि we are offering 30 and your existing is 50. So that is like हम आपका टाइम भी ज़ाया ना करें, अपना टाइम भी ज़ाया ना करें. ओके, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. पेशेंस, मुझे लगता है कि HR को रूल्स डिफाइन करने चाहिए कि मैंने 1 घंटे में सिर्फ 4 फ़ोन कॉल्स करनी है. मुझे 1 घंटे में 60 नहीं करनी है, मुझे 1 घंटे में 30 नहीं करनी है फ़ोन कॉल्स. और उनको अगर मेरी सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, मुझे सैलरी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए उसी फ़ोन कॉल पे, तो मुझे अजीब सा लगेगा ये क्या हुआ मेरे साथ. जब उसको पता लगा कि मेरी सैलरी इतनी है तो काम ख़त्म हो गया. अच्छा, उसके लिए एक चीज़ है फॉर HR, सजेशन टू HR ऑल ओवर द पाकिस्तान. आई डोंट रियली फील हेजिटेंट इन दिस. आई वांट यू गाइस टू, आपने पूछा सैलरी क्या है, मैंने कहा सैलरी तो इंटरव्यू में मैं बताऊंगा. आई एम नॉट श्योर कि आई शुड टेल यू माई सैलरी और नॉट. यू इंसिस्ट, ओके आप सैलरी बता दें मुझे, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी. मैंने कहा ओके ये वैल्यू है, ये अमाउंट है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? ओके थैंक यू नहीं होना चाहिए HR की तरफ से. नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए 100% यही होना चाहिए कि हम इतनी सैलरी, इतनी रेंज का बंदा ढूंढ रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डू बिलीव कि द कैंडिडेट शुड बी जस्टिफाइड कि अगर आपको रिजेक्शन किया जा रहा है तो क्यों रिजेक्ट नहीं. मुझे रिजेक्ट करने से कोई नुकसान, वो तो रिजेक्ट तो हर इंसान ने कहीं ना कहीं होना है. अच्छा, जब मैंने कहा कि मुझे इतने पैसे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच सैलरी फॉर दिस पोस्ट, यू हैव कॉल्ड मी फॉर एंड आई एम एलिजिबल, आई फील कॉन्फिडेंट टू डू दिस वर्क. उसके बाद अगला जो सेंटेंस आना चाहिए, मैंने सैलरी इतनी बताई, आप कहोगे हम लोग तो इतने का बंदा ढूंढ रहे हैं तो सर क्या करें, या हम क्या करें, या हम आप ठीक है आपकी सैलरी इतना पॉसिबल है, कुछ आइडिया दो. पॉसिबल का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट करते तो हम ज़्यादा भी दे सकते थे. फिर आपने अगर बहुत उस लड़के ने ज़्यादा सैलरी बता दी है तो आप उसे कहो हम तो सिर्फ इतने का बंदा ढूंढ रहे हैं. उसको 80% आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट फ़ोन कॉल आएगा या नहीं आएगा, और मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी. दैट्स वन थिंग. ओके, अब मुझे एक और चीज़ पता करनी है, बोलनी है और पूछनी है. आई नो कि HR को इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. वो ये है कि जिस बंदे ने डिसाइड करना है, और जिस बंदे ने डिसाइड करना है उसका इंटरव्यू में होना कितना ज़रूरी है. उसके बगैर इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Well, definitely the person who decides is the department. ठीक है. So if they say कि yes the person is qualified enough, या इसमें वो सारी skills है, so
दैट इज़ इट, दैट इज़ द गो है, ठीक है। वो बाकी जो निगोशिएशंस होती है डेफिनेटली अब प्री इंटरव्यूज इतने होते हैं टेलीफोनिक के द HR गोज विद व्हाट द डिपार्टमेंट सेज। Ladies and gentlemen, don't give out your all the information to random guy, random person. ज़्यादा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी आपने CV में लिस्ट डाउन कर दिया है। जो HR का काम है या उसके असिस्टेंट का काम है, वो दोबारा से आपको एक लंबा सा फॉर्म देंगे 2-3 पेजेस का, जो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा, साइन करना होगा। वो बिल्कुल गलत है। मैंने 1-2-3-4 जगहों पे रिसेंटली भी कुछ ऐसे फॉर्म्स फिल किए जो मेरा दिल नहीं चाह रहा था फिल करने के लिए, कि मैं इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ। दे डोंट हैव एनी राइट टू आस्क यू दीज क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देना ना दो, आपको ज़्यादा से जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ले ली और उसको वैलिडेट कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं उसको, और एंड पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ गलत हुई, क्या लाइन ऊपर नीचे हुई, या कौन सी चीज़ में मसला आया। आपने ID कार्ड का शायद नंबर वाला लिख दिया था, या आपने सिटी की जगह सिटी का कंट्री लिख दिया था सिर्फ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। और ये भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने देता हूँ। आई एम हैप्पी, I will spend lot of time to assist you, enable to know more about me, but are you sure कि वो कंपनी, वो जो HR लोग हैं, उनका आपने क्या जानते हो आप, उनका एड्रेस, उनका ID कार्ड नंबर, उनका वो आपकी इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। और ये हो रहा है, आई विल गिव यू नेम्स इफ़ यू वांट, बट नो आई विल नॉट, कि कुछ लोग सिर्फ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंसानों की इकट्ठी करने के लिए पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं। सो डोंट गिव आउट योर डिटेल्स इफ़ यू डोंट नो द नेक्स्ट पर्सन। Well, I would, yes, I am against the form filling thing, ठीक है, but definitely अगर if you stand against कि हमने information देनी नहीं है, so I do believe that is wrong, ठीक है। So it is something कि आपका mostly mostly लोगों का concern ये होता है कि once I was interviewing a person from KPK side, and I asked him कि what exactly does your family member do. Apparently it was a big thing for him to tell me about his family member. I said ठीक है, it's none of my concern. Why knowing about your family member is important? Because if let's just say कि आपकी 3 से 4 बहनें हैं, you have a mother, you do not have a father, means you are the person जिस पे आपके घर वाले dependent है. So we need to consider these factors as well. Definitely जब आप चीज़ें बता रहे होते हैं तो it's like the person thinks कि इसको सिर्फ information चाहिए, या the person is just trying to have the communication, but every question we ask उसके पीछे एक कोई रीज़न होती है कि it's related to your study, it's related to your timing, it's related to your like location, आपको flexible है कि नहीं है. So the forms are not like legal. Not, I won't say legal, ठीक है, it is legal as well in some places, but yes, अगर तो आपसे फॉर्म फिल करवाया तो it's okay, go with that. वही चीज़ अगर आपसे इंटरव्यू में रिपीट करवाया तो yes, that is so. So अगर इंटरव्यू में आपको कुछ और नया मिले तो yes, go for that interview, but अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझसे इंटरव्यू में वेरीफाई करवाया जाए, एक पेज का फॉर्म दे दिया जाए, आई विल बी हैप्पी टू फिल इट, ना कि मुझे कहा जाए कि ये फॉर्म है फिल करना है जिसमें जो है ना मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक मुझे सारी एक्टिविटीज़ पूछी जाए, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। कहीं पे HR की ज़्यादा वैल्यू होती है सिलेक्शन में। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, किसी में आपका जो सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, किसी में मार्केटिंग के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हायरिंग में, किसी में जो है IT के लोग और IT के और जिन्होंने काम करवाना, जिस डिपार्टमेंट ने काम करवाना है आपसे, उस डिपार्टमेंट का हेड, आपका CEO और आपका HR जब तक आ ना जाए सीट पे, आप मुंह ना खोलें। आप क्या कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा गलत सीधा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, एज फॉर द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ये मोस्टली लोगों के कंसर्न्स होते हैं, बट देन आई डू बिलीव कि यस, जब तक डू नॉट जस्ट गो इन फॉर एन इंटरव्यू विद एनीवन, ठीक है, जब तक पर्टिकुलर लोग ना आए, यू डू नॉट हैव टू गिव एन इंटरव्यू,
क्योंकि it's like it means कि you would be called for a second interview if they are not the designated person. But when we say कि rejection की कहीं नहीं होती है, so now the thing is कि जब हम interviews conduct करते हैं तो एक दिन में we have multiple positions of interviews, multiple people, and then the feedback process is a bit late. कुछ लोगों को कहते हैं yes these are good candidate, but then we will be calling them back once हमारे पास और CVs आ जाए और लोगों को देख ले to just see कि if better हो. इतने में you have approximate 20 to 30 people who you are supposed to, the HR is supposed to inform कि you were rejected. So that is like something that is really sad for an HR as well. अच्छा, ये उनकी साइड से valid comment है, valid. I will take it as a valid comment कि वो HR चाहती है कि वो किस तरह मुश्किल से रिजेक्ट की कॉल जाएगी या मैसेज जाएगा. हाँ, it's a difficult thing, but I think मैसेज या एक दो WhatsApp पे या कुछ मैसेज ऐसा चला जाए तो बेहतर है. लेकिन उनकी जॉब डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड. उधर से भी कंपटीशन है और जोर है कि राइट कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहिए. आपका एक इंटरव्यू देख के जो है ना वो घर में बैठना अच्छी बात नहीं है. यू नीड टू हैव एट लीस्ट 3, 4, 5 इंटरव्यूज एवरी मंथ सो दैट यू नो दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन अ राइट वे. मुझे एक इंसान ने कहा था, मुझे कुछ साल पहले आई वॉज जॉबलेस फॉर लाइक 2 months, और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे एक इंसान ने बोला तुम्हारी जॉब क्या है आजकल. मैंने कहा आई एम जॉबलेस. तो वो इंसान मुझे कहता है कि तुम्हारी जॉब ये है कि तुम 8 घंटे जॉब ढूंढो रोज़ाना. व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ सैम्पल एक सिलेक्शन के लिए? इफ़ यू वांट टू हायर लेट्स से business development manager in your company who will bring more business in your organization, what do you think कितनी यूनिवर्सिटी से टोटल नंबर ऑफ सैम्पल क्या होना चाहिए अगर आपने एज सही सिलेक्ट कर लिया? जैसे यू वांट अ गाय हु इज अंडर 25, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके सामने CV पड़े हैं अंडर 25 के, व्हाट इज़ द राइट सैम्पल? Well, I would say कि definitely जो हमारे recommended sample है that should be at least 5. ठीक है. I like that answer. And when we have you have 20 people I interview and hardly उसके अंदर से the department likes 5 people. Now these 5 people might call for a second interview if they're really capable, and yeah you can do other sorts of assessment क्योंकि आपने एक बार इंटरव्यू लिया है, वापस इंटरव्यू लेने से क्या होगा? इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. सो या एक कंपनी आई विल सैल्यूट दोस गाइस. द कंपनी इज कॉल्ड होंडा पाकिस्तान, होंडा एटलस. वो कार बनाते हैं रेवन रोड पे, थोड़ा सा आगे जाके उनका ऑफिस है. मुल्तान रोड पे. आई फॉरगॉट दैट. आई वेंट देयर व्हेन आई वाज रियली यंग एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर वर अबाउट 500 कैंडिडेट्स इन अ बिग हॉल. सबने एग्जाम दिया, उनमें से ओनली एंड ओनली 50 सेलेक्ट हुए. बाकियों को कहा घर चले जाओ. 2 घंटे बाद एक और एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ओनली 10 सेलेक्ट हुए. उसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ओनली 6. सो शी इज़ राइट, शी हैज़ डन अ वेरी गुड एस्टिमेटेड सैम्पल वैल्यू गिवन मी. वो 5 कह रही है, उन्होंने 6 लोग सेलेक्ट किए, 6 लड़के सेलेक्ट किए. उसके बाद 6 लड़कों का बारी बारी इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में 6 लोगों का पैनल था और कंपनी का ओनर भी वहाँ पे बैठा हुआ था. और आई वाज सो सरप्राइज कि वहाँ पे पूरी कंपनी में कोई 5,000 लोग होंगे होंडा की फैक्ट्री में. और 5,000 लोग वाइट शर्ट, वाइट ट्राउज़र, ब्लैक शूज़, वाइट सॉक्स, ब्लैक बेल्ट सबके पास, ओनर से लेकर सारे नीचे ऊपर तक सारा. तो उनमें से 6 लोगों का लंबा लंबा अच्छा कॉम्प्लेक्स डिटेल इंटरव्यू हुआ. और उसके बाद वो बाहर आता है और वो उसका नाम, एक लड़के का नाम लेता है और कहता है कि यू शुड कम हेयर. पहले तो वो ये कह रहा था यू शुड रिमेन सीटेड एंड रेस्ट ऑफ यू मे लीव. तो अभी 6 लोग रह गए थे. अगर पहला लड़का एक्सेप्ट ना करता तो वो किसी और को कॉल करता, उन्हीं में से जाने नहीं देता. तो उसने उसका नाम लिया, उसको कॉल किया. और वो मेरी यूनिवर्सिटी का मुझसे एक सीनियर लड़का था, मेरे से सीनियर सेमेस्टर का. आई वाज हैप्पी दैट इट वाज ऑल वेंट गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किस तरह 6-7 घंटे में आपको खाना खिलाया, बहुत अच्छा VIP किस्म का खाना खिलाया.
और आप में से एक लड़के को सिलेक्ट किया और उसको जॉब दे दी, उसने साइन किए एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड हैप्पी, वैलिडेटेड प्रॉपर्ली. सो या दिस इज़ वन टाइप ऑफ HR. बट मुझे जो वे ऑफ सिलेक्शन पसंद है, वन डे यू कॉल ऑल योर कैंडिडेट्स. उसमें भी प्रॉब्लम्स है, जगह है, अवेलेबिलिटी है, वो कोई अच्छी कंपनी होगी तो उसके पास सारा कुछ हो सकता है. न्यू कंपनीज के लिए तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके, अब हम इसको, मेरी तरफ से एक सजेशन पहले मैं दूंगा, फिर आप देंगी अपनी ऑडियंस को HR के सिलसिले में. Guys, if you want to look for a job, if you want your own type of job, the job which will give you satisfaction and happiness and some money as well, try to look for job at least 8 hours per day for 6 days. यही मेरा मैसेज है. और be patient and keep working hard and you will find the right job. And if you are in deep down trouble, you need a psychologist, psychiatrist as well, maybe. Okay, so when we talk about a jobless person, so yes, apply for the job. अगर आपको, if you receive a call, apply for the job that is related to you. Just do not drop your CVs in every position, every post. If you get a call and you see that a distance was a particular thing, still go in for an interview. क्योंकि every interview will be will teach you something new. ठीक है, it is an experience जो कि आपको मिलेगा. So yes, उसके बाद it's a two-way process. You go into an interview, the people are assessing you and you are assessing the people as well. So if you get selected, you can say yes, I am not interested in this company because distance बहुत है, finance है, yeah, whatever the reason is. So and then yes, never be disheartened. नहीं मिली आपको जॉब, रिजेक्शन आ गया, it's okay, it's a part of life. जब मिलनी है तो you will get a good job. Till then, if you get opportunities of internship, volunteer work, go for it. Anything that can make your CV strong is good for you. Again, be patient and try to discuss with your friends, family, and you'll find the right solution. Anam, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It was really a good experience. I think मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, तो इंशाल्लाह फिर कॉल करेंगे और फिर आप आए. यू मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल. और इसी तरह लोगों को गाइड करें, इट्स रियली यूजफुल. तो एक साइकोलॉजिस्ट प्लस एक HR प्लस उन्होंने टीचिंग भी की है. शी इज़ रियली यूजफुल, शी इज़ रियली टैलेंटेड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर. Thank you so much. You're welcome. Okay, take care. Allah Hafiz. Bye.